Well, this is exactly what Karachi Kings needed, and the smiles on Wasim Akram's face pretty much tell you a story. A much needed win for Karachi, and a timely one, that too against their arch rivals Lahore Qalandars. The cheers by the crowd, the jubilation is evident on the face, and a sigh of relief on Imad Wasim's, because he's been coming and giving those losing captain interviews. Not today though. Today it was a wonderful victory by Karachi Kings, and a convincing one, I have to add. 185 for 5 Karachi Kings made, and James Vince was the top performer for them. He really set the tempo at the top. In response, Lahore Qalandars fell short. They were falling behind in the bowling department, and even with the bat, they just weren't there. Karachi Kings winning the game in the end by 67 runs. Welcome to the Pitchside studio, and a huge congratulations to Karachi Kings. I mean, the kind of atmosphere we had, it was only befitting that we had the home side win. I've been joined by a very special guest from Karachi Kings, Imran Tahir, and उनके साथ एक खातून बैठी है जो मुझे एक टिश्यू पास करना चाहती हूँ. ये आपके लिए शोकेस है ना. मैं अपने जरा आंसू पूछ लूँ. I just want to wipe my tears because अरूज के दिल से खुशियाँ निकल रही हैं कि कराची जीता है, और इमरान ताहिर की भी, you know, that the smile tells you everything. इमरान, I mean, हमारी एक डिस्कशन चल रही थी, थोड़ी नोक झोंक चल रही थी कि कौन जीतेगा, कराची जीतेगा, लाहौर जीतेगा. मैंने बड़े कन्विंसिंगली कहा कि लाहौर जीतेगा, लेकिन एंड में जीता कराची किंग्स. जी, मैं सबसे पहले तो हमारे जो क्राउड है उनका बड़ा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ. दे बीन देयर एवरी गेम, और हमें जिस तरह उन्होंने सपोर्ट किया है, तो इट्स बीन अ टफ स्टार्ट, क्योंकि मेरा ख्याल है लास्ट सीज़न से अभी तक हम हार्डली कोई मैच जीते हैं, तो ये मैच हमारे लिए बड़ा ज़रूरी था जीतना. तो दैट पुट स्माइल ऑन आवर फेसेस, बट आई थिंक इट्स अ लॉन्ग कॉम्पिटिशन, सो वी हैव टू कीप डूइंग व्हाट वी डिड टुडे. लेकिन हाँ, काफ़ी रिलीफ है, और हमारे कैंप में बड़ी खुशी है, क्योंकि हम बहुत क्लोज पहले 2 मैच हारे हैं. मगर यस, ऑल इन ऑल वेरी हैप्पी एंड वेरी प्लीज टू बी हियर. वेरी प्लीज टू बी हियर, वो तो नजर आ रहा है. अरूज, यू आर आल्सो वेरी प्लीज टू बी हियर. आज कराची जीता है, लेकिन ये बताएं कि आज क्या चीज़ उन्होंने सही की जो बाकी मैचेस में नहीं की. ज़रा हमने ये प्री मैच में भी बात की थी कि देव ट्राइड अ फ्यू कॉम्बिनेशंस. हर मैच के बाद तब्दीलियां हो रही थी, एंड आई सेड दैट this was probably the best 11 they've put out in the 4 games they've played. ना सिर्फ वो, बट जो बैटिंग ऑर्डर भी आज खिलाया, मैथ्यू वेड को जो ओपन खिलाया, और वहीं से गेम का टेम्पो जो है वो सेट हुआ. तो आई थिंक द रोल ऑफ द डाइस फ्रॉम इमाद, he got every decision spot on. और जब बैटिंग फर्स्ट करते हुए जब आपको अंदर डाल दिया जाता है बैटिंग करने के लिए, 185, उन्होंने पोस्ट मैच में कहा कि he also wasn't expecting this to be more than a 170-165 विकेट. 185, और फिर जिस तरह से उनके बॉलर्स ने डिफेंड किया. आई थिंक फॉर द सेक ऑफ द कॉम्पिटिशन इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट दैट ऑल टीम्स सॉर्ट ऑफ स्टे नेक एंड नेक, ताकि कोई एक आधी या 2 टीमें पीछे ना रह जाएं. सो आई थिंक इट्स अ फैंटास्टिक विन इन दैट रिगार्ड. You're talking about it being a fantastic win, and it was a fantastic win because the margin of victory was also one of the highlights of today's game. Let's have a look at the stat tag. I think इससे पता चलता है कि ये जो win है कराची किंग्स का, it's perhaps one of the best that they've had in the HBL PSL. Highest victory margin in Karachi, right at the top, 67 runs. अभी तक जितने भी HBL PSL हुए हैं, उसमें सबसे ज़्यादा जो मार्जिन ऑफ विक्ट्री है वो आज की थी, एंड दैट आई थिंक टेल्स यू अ स्टोरी एज वेल इन टर्म्स ऑफ हाउ कन्विंसिंग दे वर. तो इमरान, ये विक्ट्री बहुत ज़रूरी थी कराची के लिए बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि पिछले मैचेस आप लोग हारे भी थे. यू नो, मोराल थोड़ा मुझे लग रहा था कि डाउन है, तो अब एकदम से लिफ्ट हो जाएगी पूरी टीम. जी बिल्कुल लिफ्ट हो जाएगी. देखिए, मैंने जिस तरह पहले मेंशन किया है कि हमारे 2 मैच ऐसे थे कि कुड हैव गॉन ईदर वे, और हम बहुत क्लोज थे. वहाँ से थोड़ा सा हम डिसअपॉइंट ज़रूर थे, क्योंकि नया सीज़न था, और जिस तरह लास्ट सीज़न हुआ है, मैं तो यहाँ पे नहीं था, लेकिन आई फेल्ट दैट कि वी नीडेड दैट बैडली व्हाट वी हैड टुडे. तो लाइक आई सेड, हम काफ़ी प्रैक्टिस और क्रिकेट खेल के आए हैं, तो जब भी कोई नया कंपटीशन होता है तो मैं एग्री करूँगा इनकी बात से कि जो टीम कॉम्बिनेशन है वो बड़ा ज़रूरी होता है. मैं काफ़ी टीमों में खेला हूँ जहाँ पे आप you have to have faith in your players, और you have to give them a fair opportunity. और यहाँ पे अगर आप देखें तो I mean people enjoy it from outside, लेकिन यहाँ पे
शॉर्ट बाउंड्रीज हैं, मैंने इससे ज़्यादा ड्यू कभी नहीं देखी पाकिस्तान में इससे पहले। तो अब जिन लोगों को क्रिकेट का पता है वो इस चीज़ को समझ सकते हैं, लेकिन लाइक आई सेड इट्स बीन टफ स्पेशली फ्रॉम बॉलिंग पॉइंट ऑफ व्यू। लेकिन ये हमारे लिए काफ़ी मायने रखता है। आज जो हम जीते हैं तो इसके बाद हम उम्मीद करते हैं कि हम इसी तरह आगे परफॉर्म करेंगे जो हमारे मैचेस अहेड हैं। एग्जैक्टली हम भी यही उम्मीद करते हैं कि आपकी मार्जिन ऑफ विक्ट्री जो है इतनी ही रहे या इससे बढ़ती भी रहे। दैट वाज द स्टार अटैक फॉर यू। अच्छा इमरान, एट द एज ऑफ 42 43 आई मीन आप इतने फिट हैं, यू आर सो फिट। जब देखा जाए यू आर एन इंस्पिरेशन टू ऑल द यंगस्टर्स आउट देयर अराउंड द वर्ल्ड। तो कैसे करते हैं आप? मतलब आई रियली वांट टू आस्क यू लाइक हाउ डू यू कीप गोइंग, हाउ डू यू हैव दैट हंगर? यू नो दैट्स बीन वन ऑफ द थिंग्स, अरूज भी हमारी भी डिस्कशन हो चुकी है कि एक वो हंगर इनकी तरफ से हमेशा नजर आता है। देखें, जिस तरह आपने मेंशन किया है, मैं ये समझता हूँ कि मैं सबसे पहले तो रोल मॉडल जो है वो बनना चाहता हूँ अपने बेटे के लिए, क्योंकि मुझे क्रिकेट काफ़ी लेट मिली है, इंटरनेशनल क्रिकेट, जिसका मेरा ड्रीम था कि मैं 1920 से खेलता और 30 इयर्स तक खेलता एंड आई शो द वर्ल्ड के व्हाट आई हैव इन मी और दिस एंड दैट। तो मेरा ख्याल है मैं शायद उसी पैशन से जी रहा हूँ अभी तक, और मैं चाहता हूँ कि मैं जब तक खेलूँ आई लुक लाइक ए प्रॉपर प्रोफेशनल। अगर मैं अंदर जाऊँ तो किसी को ये फील ना हो कि यार ये बुढ़ा है, इसे 2 रन ले लो। तो आई डोंट वांट सी दैट एंड आई डोंट वांट फील दैट। तो मेरा ये ख्याल है इसी की वजह से। लेकिन जो बिहाइंड सीन है, जाहिर बात है, आई हैव टू ट्रेन होल ईयर, आई गो प्ले लीग्स ऑल ओवर, which I'm really grateful to God because I still can able to do that, but purely because I work hard, and I'm still really grateful to see the result also. I mean, यही हमें आपकी तरफ से नजर आया, जो आपका एक स्पिरिट है, the way you play your game, इधर उधर भाग रहे होते हैं, डाइव कर रहे होते हैं, इसीलिए आज आप हमारे मसालेदार मोमेंट्स में भी हैं। ये आपके सामने नजर आ रहा है जो इनका एफर्ट है, यू नो द डाइविंग एफर्ट दैट वी हैव सीन फ्रॉम इमरान ताहिर, एंड इट्स नॉट द फर्स्ट टाइम दैट वी हैव सीन इट। आई मीन इन टर्म्स ऑफ कमिटमेंट 10 में से 10 नंबर, शायद उससे भी ज्यादा अगर होते तो आपको वो मिल जाते, बिकॉज वी सी यू फ्लाइंग अराउंड, वी सी यू सेलिब्रेटिंग विद द सेम अमाउंट ऑफ पैशन that you had perhaps when it was your debut game. So it's just great to see from your perspective this kind of performance. Aruj, आपकी क्या राय है? You know, having this kind of passion and hunger that we've seen from Imran, he plays all around the world. या आपका कोई सवाल हो उनसे तो जरूर पूछें। A couple of things, इमरान। एक तो आपके ऊपर एक मेंटोर टाइप प्रॉब्ली विद इन द टीम भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती होगी, आई एम श्योर, एज एन एक्सपीरियंस प्लेयर, बट उसको और अपनी परफॉर्मेंसेस को साथ बैलेंस करना, क्योंकि आई थिंक परफॉर्मेंस देना या लीड फ्रॉम द फ्रंट अपनी परफॉर्मेंस से भी ज़रूरी होता है। जिस तरह आपने कहा कि यू आर हैप्पी दैट यू स्टिल सी योरसेल्फ परफॉर्मिंग, तो वो डबल रोल कितना आसानी से आपके नेचर में फिट होता है? देखें, मुझे इसमें कोई एतराज़ नहीं है, क्योंकि मैं क्रिकेट जब मैंने शुरू किया था तो जब मेरा ख्याल है आई वाज 33, I didn't actually know what I was doing. I was just playing because I had a big heart, or I would just go and bowl leg spin. And I wanted to be like Abdul Qadir, anybody, Shane Warne, Mushtaq Ahmed. लेकिन मैं ये समझता हूँ मेरी बदकिस्मती है कि मैं काफ़ी हमारे सीनियर प्लेयर से पूरी दुनिया में, जहाँ मैं लीग क्रिकेट, काउंटी क्रिकेट सब खेला हूँ, फर्स्ट क्लास क्रिकेट पाकिस्तान में खेला हूँ, तो मुझे वो हेल्प नहीं मिल सकी जिसको मैं अर्ली स्टेज पे चाहता था। तो जिस तरह आपने मुझे कहा है कि अगर मैं अब अपना ड्रेसिंग रूम शेयर कर रहा हूँ किसी यंगस्टर के साथ, इवन मैं पाकिस्तान आऊँ, CPL जाऊँ, इंग्लैंड जाऊँ, मैं कोशिश करता हूँ कि अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ, जो कि मेंटर रोल है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जिन लड़कों ने आगे 10 साल क्रिकेट खेलनी है, इट हेल्प दैम, सो दे डोंट हैव टू वेट 10 years, समवन गो टू दैम एंड हेल्प दैम। तो क्योंकि मेरे पास ये नहीं था, तो मैं चाहता हूँ कि मैं मैसेज जल्दी से उनको पहुँचाऊँ। उसके अलावा पर्सनल परफॉर्मेंस इसलिए इम्पॉर्टेंट है, मैं ये बात खुल के कहना चाहता हूँ क्योंकि मैं इसका वेट भी कर रहा था। आई एम द ईजी टारगेट एट ए मोमेंट, कि आप एक बैड परफॉर्मेंस, 2 बैड परफॉर्मेंस, देन यू स्टार्ट थिंकिंग आई थिंक ही पास हिज टाइम, ही इज गेटिंग ओल्ड, ही इज दिस एंड दैट। सो लेट मी टेल ऑल द पीपल दैट वी नो इनसाइड that when is the time and when we need to leave the game, absolutely, because I have lots of respect for the game,
and I don't want obviously people start picking me from the crowd and people telling me, oh, you know, you're getting onto the ball slow and this and that. I know myself, so please keep your advice to yourself. I will tell you when I want to retire. चले इमरान ताहिर का मैसेज है सबके लिए कि वो खुद बताएंगे उन्होंने कि वो कब रिटायर करेंगे. इमरान जाते जाते obviously I want to ask you, playing in Pakistan, you know, with this kind of crowd, आपकी family, everybody involved, वो कितना स्पेशल है आपके लिए? ऑब्वियसली आपकी अर्ली मेमोरीज तो यहीं की हैं. बिल्कुल, आई फील वेरी प्राउड. मैं जब यहाँ पहले कराची आता था तो मेरी ये ख्वाहिश तो होती थी कि मैं यहाँ स्टेडियम पे खेलूँ, लोग मुझे देखने आए, जिस तरह हम अपने हीरोज़ को देखते थे. जिस तरह पाकिस्तान टीम यहाँ पे खेलती थी तो मैं कभी इधर बैठा होता था यहाँ लाहौर में. तो ये मेरे लिए बड़ी प्राउड फीलिंग है और मैं जब भी पाकिस्तान आता हूँ इट्स वेरी स्पेशल टू मी, क्योंकि मेरी फैमिली ने मुझे कभी इंटरनेशनल क्रिकेट लाइव खेलते हुए नहीं देखा. तो मैं जब पाकिस्तान आया था वर्ल्ड 11 के साथ, दैट वाज द फर्स्ट टाइम दे वॉच मी प्ले. Unfortunately, not my mom and dad because they passed away that time, but my brothers and sister they came and watched. तो मेरे लिए ये मैं हर जगह दुनिया में जाके खेलता हूँ, लेकिन यहाँ पे आना बहुत बड़ा जॉय है मेरे लिए. ठीक है इमरान, अब हम आपको जाने देंगे बिकॉज ऑब्वियसली आपने भी जाना है, अपनी टीम को ज्वाइन भी करना है और सेलिब्रेट भी करना है विद ऑल ऑफ देम, क्योंकि काफ़ी देर बाद मौका मिला है. तो हम चाहेंगे कि आप जाएं और अच्छी तरह एंजॉय करें. थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम. And yeah, that was Imran Tahir for you. He's as energetic as ever. And जैसे कि उन्होंने कहा है कि प्लीज उनका पीछा छोड़ दें, रिटायरमेंट के सवाल ना करें. Leave it to him for when he wants to call it a day. But yeah, on that note, we'll take a short breather and we'll catch you in a bit. What a fabulous performance by Karachi Kings. जिसे कहते हैं ना, वाकई लगता है कि उनको लग गए हैं wings because they needed those to progress in this tournament, and that's what we saw from them. So I'm well and truly happy for them, and I've now been joined by Bazid Khan, जिनका अब ताल्लुक जो है ना लाहौर से ना कराची से. अब वो पिंडी में रहते हैं, लेकिन कुछ सॉफ्ट स्पॉट तो होगा लाहौर के लिए. पिंडी नहीं, इस्लामाबाद. चले इस्लामाबाद में रहते हैं, पर कोई सॉफ्ट स्पॉट है लाहौर के लिए कि नहीं? सच सच बताएं. नहीं, सॉफ्ट स्पॉट तो है, लेकिन जो इंटरेस्टिंग चीज़ अब ये है कि हर जगह मुल्तान और कराची जो टॉस जीता है वो बॉलिंग करता है, और पिछले मेरे ख्याल 4 गेम्स हो गई हैं जो बैटिंग पहले कर रहा है वो जीत रहा है. आज भी यही हुआ है, मुल्तान में भी यही हुआ है, तो शायद देखना पड़ेगा इस बात को. हाँ नहीं, ये वैसे काफी अच्छा पॉइंट है एक्चुअली, बिकॉज टीम्स वो जैसे ना ऑटो पे दे आर विनिंग द टॉस एंड दे आर ऑप्टिंग टू बॉल फर्स्ट अरूज, लेकिन मे बी बैटिंग फर्स्ट इज द वे टू गो. आई डोंट नो. ये पिछले सीजन भी बात होती रही थी कि कराची में चूंकि चेसिंग ग्राउंड है तो यू ऑप्ट एंड पुट द टीम्स इन फर्स्ट, बट कराची के लिए इट्स वर्कड एज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, क्योंकि इमाद कंसिस्टेंटली ये कह रहे हैं कि उन्होंने 2 अच्छे गेम्स खेले थे, जस्ट कुडंट गेट ओवर द लाइन. बट आज सेटिंग अ स्कोर दे वर फोर्स्ड इन इट. बट वही वाली बात जो इमरान ने भी रिएटरेट करी कि गुड कॉम्बिनेशन जो उन्होंने 11 खिलाई वो, और उसको सही प्लेयर्स को सही जगह पे इस्तेमाल किया. मैथ्यू वेड का प्रमोशन, फिर बेन कटिंग की आखिर में इमाद के साथ पार्टनरशिप, एंड देन ड्यू के साथ. और इमरान ने अभी ये भी कहा कि इतनी ड्यू उन्होंने कभी पाकिस्तान में नहीं देखी, और हम पिछले कुछ मैचेस से देख रहे हैं देयर इज अ लॉट ऑफ ड्यू. तो बॉलिंग सेकंड इज नॉट ईजी, द बॉल कम्स ऑन अ लिटिल बिट बेटर, बट फॉर द बॉलर्स टू कंसिस्टेंटली कीप पिकिंग अप विकेट्स वाज क्वाइट इंप्रेसिव. इसीलिए आपने टिश्यू रखा हुआ है ड्यू की वजह से? आपके लिए आप फिर अपने आंसू पोंछ लेंगे. तब से टिश्यूज दे रही हैं लाहौर के हारने पे. okay. आंसू जो मैं अपने सही से पहुंच रही हूँ. बट कराची के लिए कोई आंसू नहीं है आज वो सिर्फ सेलिब्रेट करेंगे. एंड ऑफ कोर्स व्हेन यू लुक एट देयर परफॉर्मेंस एंड हाउ इट पैन्ड आउट, James Vince is somebody who really set the tone for them, which is why he's also our master blaster for today. बड़े एलिगेंट, बड़े क्लासी प्लेयर हैं. जब भी रन्स बनाते हैं तो लगता है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है पिच में, कोई प्रॉब्लम नहीं है बॉलिंग में. और ऐसे लग रहा था कि आज शायद मार्टिन गप्टिल की तरह टाइम ले लिया था और इनिंग्स बन गई थी. जब वो आउट हुए तो शायद बड़ी इनिंग्स मिस आउट कर गए. Yeah, these are the areas where he scored, and it was a great performance by him. अच्छा अरूज, James Vince, you know,
अभी ILT20 से आ रहे हैं और वहाँ पे उनकी टीम ने टूर्नामेंट जीता एंड देन ही परफॉर्म्ड रियली वेल एज वेल. इस तरह जब आप अराउंड द वर्ल्ड खेलते हो तो आपको लगता है कि उससे आपको और कॉन्फिडेंस मिलता है. आई हैव सीन दैट विद हिम एटलीस्ट कि थोड़ा सा मुझे लग रहा है वो इम्प्रूव कर रहे हैं. 100%, क्योंकि आप कहते हैं विनिंग टीम, वो विनिंग हैबिट होती है एंड देन आप उस फॉर्म में होते हैं जहाँ टीम जीत रही होती है एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपकी कंट्रीब्यूशन उसमें होती है. सब कॉन्टिनेंट की कंडीशंस मोर और लेस सिमिलर, तो पेस और विकेट को भी जज करना, बट इट्स नेवर इजी क्योंकि कंडीशन थोड़ी भी मुख्तलिफ होती हैं, दे आर डिफरेंट. एंड फॉर हिम टू प्ले द वे ही डिड, क्योंकि कराची के पास आई डोंट थिंक इसके बाद चांस था, क्योंकि वो ये ऐसा गेम होता है कि जब आप 4 हार जाते हो तो यूर ऑलमोस्ट लेफ्ट बिहाइंड और फिर आप कैचअप खेलते रहते हो और उस वक्त यूर होपिंग अगेंस्ट होप कि आप अपने सारे मैच जीतें, बाकी रिजल्ट सारे आपके फेवर में जाएं दूसरी टीमों के. सो यू लीव इट टू समवन एल्सेस हैंड्स इन टर्म्स ऑफ योर ओन फेट. तो जेम्स विंस या बाकी जितने भी इस तरह के प्लेयर्स हैं, फ्रेंचाइज क्रिकेट से खेल खेल के का फायदा ये होता है कि यू बिकम सो यूज्ड टू कंडीशंस कि जो अडेप्ट करने का टाइम होता है दैट इज बिकम वेरी लेस एंड दैट्स व्हाई यू सी प्लेयर्स वेरी क्विकली स्टार्टिंग टू परफॉर्म इन डिफरेंट. लेकिन कराची के लिए शायद अभी भी यही हो कि दे डिपेंड ऑन अदर टीम्स टू गेट देम थ्रू. ऑल्सो एक बारिश से बरसात तो नहीं होती ना, एक ही मैच जीते हैं. आप इतनी अफसरदा क्यों है? कराची एक ही मैच जीता है अभी. मैं अफसरदा लग रही हूँ? मैं तो कहीं से भी अफसरदा नहीं लग रही. आई एम वेरी हैप्पी फॉर कराची. इट्स ऑल पार्ट ऑफ आवर बैंटर. लेकिन कराची के लिए जो सबसे चीज एक जो क्लिक कर रही है, जिसके बारे में हम बात भी करेंगे, इज देयर कैप्टन. वो विकेट्स भी ले रहे हैं, वो रन्स भी स्कोर कर रहे हैं. आज फिर से उन्होंने एक कैमियो खेला which was integral to that score that they made. So let's have a look at the player of the match. जिस वक्त ये आए थे बैटिंग करने, एक पार्टनरशिप की फिर से ज़रूरत थी क्योंकि एक बीच में थोड़ा सा डल पीरियड आया था. एंड 35 फ्रॉम 19 जिस किस्म के इन्होंने शॉट्स खेले, पहले मैच में भी इन्होंने बहुत ही शानदार बैटिंग की थी. एंड नॉट जस्ट विद बैट, विद बॉल. कहते हैं गेम इन्होंने ऐसा सेटअप कर दिया कराची के लिए कि ये आखिर में इन्हीं के वो रन थे जो डिफरेंस था. एंड देन एवरी नाउ एंड देन ही बॉल्स ब्यूटीफुल डिलीवरीज विद द बॉल. 23 रन भी ज़्यादा नहीं दिए और एक इम्पॉर्टेंट विकेट. बाज़त मेरा सवाल जो है आपसे बड़ा सिंपल है. डू यू थिंक इमाद वसीम इज नॉकिंग ऑन द डोर्स ऑफ दैट सिलेक्शन ऑल टुगेदर ऑफ नेशनल टीम? बिकॉज आप मे बी इट्स अ लिटिल प्रीमेच्योर बट एटलीस्ट पहले जो 3 मैचेस हुए हैं उसमें उन्होंने विकेट्स भी ली हैं, रन्स भी स्कोर किए हैं. देखिए T20 क्रिकेट में ही इज़ नेवर वेरी फार ऑफ, इज़ ऑलवेज इन द कॉन्वर्सेशन. वो तो हैं ही, लेकिन अगर आप पाकिस्तान टीम को देखें तो इस वक्त पाकिस्तान टीम का नंबर 1 ऑलराउंडर, स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर शादाब तो हैं, फिर नवाज़ हैं. तो पैकिंग ऑर्डर में अभी भी वो तीसरे नंबर पे हैं. शायद वापस आ सके. नवाज इज़ डूइंग एग्जैक्टली द सेम जॉब दैट इमाद इज़ डूइंग बट विद मोर कंसिस्टेंसी विद द बैट. तो जब उनको बैटिंग में प्रेफर किया जाता है वो इसलिए कि पावर हिटिंग में उसको फ्लोट कराते हैं स्पिनर्स के खिलाफ, और उसमें पाकिस्तान को उसने मैचेस जिताए हैं. टू बी टॉकिंग अबाउट इमाद इज़ वेरी गुड, इज़ ऑलवेज इन द कॉन्वर्सेशन. T20 cricket में the utility that he possesses is a lot, but I still think that it is Shadab, Nawaz and then Imad at the moment. ठीक है. 34 runs of 3 overs इमाद वसीम ने स्कोर किए, तो which is why he's also in our switched on moments of the day. अब बैटिंग फॉर्म में तो है. एक मैच छोड़ के इन्होंने बड़ी उम्दा इनिंग्स खेली थी. आज फिर वही फॉर्म, और इनके लिए ये रोल अच्छा है बिकॉज देयर इज नो ऑप्शन बट टू अटैक. आई थिंक वंस ही हैज अ लॉट मोर ओवर्स ही फाइंड्स इट अ बिट डिफिकल्ट. अच्छा, एक बात जो पहले डिस्कशन हुई थी रूज, वो ये थी कि मैथ्यू वेड का इस्तेमाल सही नहीं किया जा रहा. आज जो आपने एक बात की थी कि या तो उनको शुरू में इस्तेमाल करो या बाद में इस्तेमाल करो, जो एक जनरल डिस्कशन हुई थी, आज वही नजर आया कि आज शर्जील खान को बैठाया गया. एंड ही सो ये जो चेंजेस होते हैं थोड़े बहुत, दे डू मेक अ डिफरेंस. 100%. एंड आई थिंक कि इमाद एंड कराची का थिंक टैंक के लिए ज़रूरी था टू सॉर्ट ऑफ गेट द कॉम्बिनेशन राइट नाउ, बिकॉज वही वाली बात कि एक और हारते फिर वो ये था कि अब हम जीतें कि क्वालिफाई करें, वो वाली कहानी. शर्जील वाज गिवन हिज फेयर सेट ऑफ चांसेस. ऑल्सो डोंट फॉरगेट ही लेट हिमसेल्फ डाउन इन द फील्ड. तो उससे भी बहुत फ़र्क पड़ता है कि आपका अगर टॉप ऑर्डर सेट नहीं हो रहा. तो हमने एक स्टैट पहले भी देखा था, कराची डजंट स्टार्ट और एंड वेल विद इन द गेम.
और वो आज दोनों चीज़ें करेक्ट हुई. They got off to a highest opening stand, they got off to a wonderful power play, और मैथ्यू वेड का सही इस्तेमाल, numbers don't lie, and you've got finishers in the sense of cutting, शोएब मलिक and इमाद, तो it only made sense कि वेड को ऊपर यूज करते, और जो ओपनिंग पार्टनरशिप थी, I think that really did set the tone for them. चले गुड ऑन देम कि ये कॉम्बिनेशन उनके लिए चल गई. थैंक यू सो मच अरूज, आपने मुझे बहुत तंग किया स्टूडियो में, लेकिन मैं आपको आज के लिए माफ़ करूंगी, आज के लिए मैं आपको माफ़ करूंगी. और ऑन दैट नोट आई थिंक वी ऑल्सो नीड टू टेक अ ब्रेक, एंड व्हेन वी डू कम बैक विल बी जॉइन्ड बाय निक नाइट. Back on the pitch side show, and a stunning performance by Karachi Kings. What a comeback indeed. They were losing their first initial few games, but it's just nice to see them get those points on the leaderboard. Now I've been joined by Nick Knight into the night. Nick, welcome. It's late at night, but it's great to have you here as always, and it's great to see that Karachi Kings have finally won. Well, it is, isn't it? I mean, I'm a neutral here, so I can sort of say that I think it's just been a very good night for the competition. They're under a huge amount of pressure, I think, coming into this game. Played 4, lost 4 if they didn't win. I like the way they approached the game. I thought before a ball was bowled, they got their side pretty much right. I mean, I was pretty... Well, I had a bit of a dig at them, didn't I, after the first game, because I felt they got the balance wrong, rather. I thought they had 8 bowlers. I don't think they need that much, and I think they've tinkered with their side quite a bit over the last few games. I think they've probably got that just about right. I also feel when it's a game you need to win, you look at your senior players, you look at your Vince, you look at your Wade, you look at your Tahir who had sat here, you look at the skipper, because they're the players that have got the experience to see you over the line. So I think they did a lot right tonight, and I think it's been a good result for the competition. It has been a good result for them, and it's definitely going to give them a lot of confidence. That's exactly what they needed, considering the last season was poor for them as well. Lahore Qalandars, they of course fell short in terms of performance, in terms of their bowling and batting as well. Let's have a look at their fall of wickets. Well, this is what started it all off. It was an ordinary shot, really crossed the line against the run of play. This was a fabulous catch. Irfan Khan Niazi is such a good fielder. This was tremendous. And then that back of a length, short of a length, we've seen it so many times here in Karachi, especially as the game goes on, that if you just bang it in short of a length, it's difficult to get away. And the run rate then rose, and it was then a time where Lahore just had to attack, and they couldn't get anything away. It was back of a length, and it was standing up, and it was hitting the fielders at the fence. This was a great catch. Tayyib Tahir, substitute, hasn't played a game in the HPL PSL, but he's a fantastic fielder. That was a good catch. And Shah Afridi came and went a swing to leg. And then the last one, or Liam Dawson, that was another good catch. That's gone high in the sky. Amir Yamin under that. And then the top edge, which went to third. Imran Tahir claimed that he didn't see it, but he still caught it. And that was that for Karachi. Right, one thing we know about Lahore Qalandars is they have plenty of pace. You know, you look at their pace attack, there's Zaman Khan, there's Shaheen Shah Afridi, Haris Rauf. Of course, maybe they weren't at their very best, but one thing they do have is a lot of pace. Let's have a look at the fastest delivery from today. Well, it's one of the great sights in the game, whatever format you're playing, someone who can bowl at, 145 up to 150. It's exciting to watch. It's not always exciting to play against, but yeah, I mean, they have an attack, don't they, that are going to put you under pressure. If it's not Haris Rauf, it's Zaman, it's Shaheen Shah Afridi. The one thing you have to do, though, is, as well as bowling quick, is to bowl accurately, because there's a lot of very good players out there who enjoy the pace. Just in terms of their bowling then, Bazid, I mean, a lot was expected of them. I mean, do you think they could have done something differently? They will go around the park. It is T20. They will get under the pump. They still have a fabulous bowling attack. They still have the likes who can bowl teams out, and they will pull something out of the bag. Rashid Khan will also join them. That will make them even better. But you look at the batting and you think that that's a bit iffy.
Maybe Billings coming in for Shea Hope will add something in there, but you look at after Fakhar Zaman, then you have to look way down the order with Visa and Sikandar to get them runs. Today even, that third wicket partnership which got 41 runs off 41 deliveries, when that wicket fell, they needed what, 100 of 7 overs, the run rate required of 13, and the game was more or less gone. So they'll have to look at the batting. I think the bowling, you would take that bowling any day of the week. Yeah, and especially like you said, when Rashid Khan comes into that attack, that is going to be one lethal attack. Now we saw some clean catches being taken today, some good ones, and there was that one in particular, Irfan Niazi. What a stunning catch he took. Let's have a look at the safe hands for today. Well, back in the day, if you fielded there, just behind square point, you were the best fielder in the side. And I reckon they probably got that about right. You'd be pretty good if you're fielding better than that. I mean, it's an absolute stunner. Oh, and when you think that your team is behind and needs a win, something like that doesn't half lift those around you. And I think it did exactly that. Yeah, that was one of the features for today. You know, we saw that catch by Irfan Niazi. There was a couple of catches in the deep as well. Overall, it was a very clinical performance by Karachi Kings. Yeah, very good. I thought they read the pitch well when they were bowling. They bowled back of the length. They pulled their length back, and it made it very difficult throughout that innings to get boundaries away. And that's why the squeeze came. Probably in the power play, they slightly full and slightly leg side and got punished. But after that, with the paces especially, it was back of the length. Even with Imran Tahir and Imad, they do is they bowl within the stumps, but they pull their length back, and that sort of set the tone. And then Irfan is a brilliant fielder. Tayyib Tahir is fantastic as well. And the catching then thereon after that, they were always in the front seat. Well, it's just nice to see that Wasim Akram seems very relieved today. I mean, we saw some nervy moments. It's just nice to see that Karachi Kings was celebrating and had smiles on their face. On that note, we'll take a short breather. Well, one thing we've seen so far is that the fans of Karachi have been bitterly disappointed by the results. Wasn't the case today, though. The home side winning, and that too against Lahore Qalandars. Definitely the icing on the cake. Let's hear their thoughts now. एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा था, क्राउड बहुत ज़्यादा था, लोग बहुत ज़्यादा आए हुए थे क्योंकि कराची लाहौर हमेशा एक बहुत बड़ा मैच होता है, एक आर्ट्स राइवलरी है। तो कराची के लिए एक टर्निंग पॉइंट था आज, क्योंकि 3 मैच हार चुके थे इससे पहले, तो अगर आज हारते तो काफ़ी मुश्किल हो जाती। लेकिन बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही कराची का और नो डाउट क्राउड बहुत अच्छा था, एटमॉस्फेयर भी बहुत अच्छा था। वेल, इमाद वसीम बहुत अच्छा कैप्टन है, एज अ प्लेयर भी बहुत अच्छा खेलता है। मैं तो कहूँगा कि इसको पाकिस्तान टीम में जगह देनी चाहिए ताकि हमारा पाकिस्तान का मिडिल ऑर्डर भी अच्छा चले। कराची को क्राउड का काफ़ी एडवांटेज था, लेकिन लाहौर ने थोड़ी सी, अगर मैं कहूँगा कि अगर बॉलिंग अटैक को बाद में रखते, क्योंकि उनकी बॉलिंग काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, तो उसकी वजह से उनको ज़्यादा अच्छा कंट्रोल मिलता है। लेकिन टॉस जीत के उन्होंने बॉलिंग पहले कर ली, तो आई थिंक दैट वाज द डिसएडवांटेज। मुझे लगता है कि अगर कराची इसी तरह ओपनिंग स्टैंड लेकर चलेगी और हार्डली 8 ओवर तक अगर विकेट नहीं ड्रॉप करती है, तो पीछे जो हमारा बैटिंग ऑर्डर है, स्पेशली शुएब मलिक और इमाद वसीम बहुत अच्छी फॉर्म में है। कोई भी हम पूरा सीजन भी हार जाते हैं ना, तो लाहौर वाले मैच में सब इतनी जान लगाते हैं कि वो हम लाजमी जीते। और कराची के क्राउड ने कराची को बहुत जो है सपोर्ट किया आज, जो मैंने खुद फील किया है। We were talking about Imad Wasim's performance, Baza, then you heard that boy there. The fans are already, you know, the murmurs are already there that should he be in the Pakistan side, should he be back in the Pakistan side? That chatter has already started. Yeah, there's always going to be chatter. PSL, HPL, PSL, whoever performs there, everybody says he should go on to the Pakistan, which is good. Which is good that Imad Wasim is performing. He's been one of the mainstays
for quite a while, and then he's been sort of leapfrogged by other spinners. But yeah, I think he is putting a case for himself, and let's see how that develops. But right now, I think he's concentrating on trying getting his team to qualify. Yeah, still a long way to go in this tournament. Thank you so much, gentlemen, for your thoughts. But the most important thing for Karachi Kings is that they've got points on that leaderboard. It was so important for them to win this one after back-to-back losses, and this is why it's a huge jump altogether. They are now number 2. They were number 6. And Multan Sultans are leading all the way because they've won 3 out of the 4 games that they have played. Remember, the top 4 teams will qualify, which is what we're all looking forward to. There's plenty of more action that's lined up for you. We've got another one happening tomorrow. It's Quetta Gladiators, and they won their previous game. They're up against Peshawar Zalmi in match number 9, live at 7 p.m. from National Bank Cricket Stadium. Fantastic game today. It's always great to have Lahore play Karachi in Karachi or in Lahore. The crowd is obviously always buzzing with the atmosphere electrifying. I really enjoyed it. I'm sure you guys did as well. We leave you now with some super moments. मुश्किल समा है और तू यहाँ बन के बादल तू झूले आसमां जीत होगी अपनी है हौसला किस्मत भी अपनी खुद बदलो जरा थकना नहीं अभी और है फैसला